Good evening, everyone. I hope everybody is doing fine. Although this is a strong statement as far as today's fall is concerned. So I thought, why not discuss what could be the possible reason of today's volatility? Although those who are in the market with a view of, their horizon is 2-3 years plus. This is another day. Maybe some people see these type of volatility days as opportunities, but again when market corrects for 2-3 days in a row, that creates a fear amongst all the participants, not all but the majority of the participant, I would say, because those who have seen cycles know that this is a small knee-jerk reaction, but it is always wise to try to reason what could be the potential reason, so that we would be better placed in the sense that whether this correction is a signal of something big coming in, or there is a possibility that these dips should be utilized so as to uh, add to your positions which you think were out of the range few days ago, but this correction had brought those names to a reasonable valuation. So this is the conversation I'm thinking of for today, since it is not a dedicated spaces. So anybody from the audience can also join in and share in their side of understanding. But I believe the way the small cap index and the mid cap index has corrected more than 2% today could signify something happening in the space, because we have been consistently across the board, and especially the people who are into the industry, the fund managers and the institution, the people who are handling big money. So they have been consistently saying that the opportunities are getting limited, as valuation is not allowing them to get so many bargains, contrary to which the amount of money which has been coming or which is coming to the markets through SIPs has been on the rise consistently. So when the opportunities are limited and the amount to be invested is large, in such cases, definitely such kind of corrections which could be attributed as a profit booking, or maybe any other reason could be a possibility. And the way SEBI and the RBI has been issuing things for the betterment of the banking and NBFCs, and especially cautioning the retailers about the amount of money coming to the small and mid caps. So definitely we should not be ignorant of the fact that all is well, and things will be rosy as they were from last 8 to 10 months. Again, the market works in such a manner that it takes a breather in between. So there could be a possibility that it can correct from here, and also maybe it can consolidate sideways also. So both these things, if that happen, is also good as far as the market is concerned, because in the long term you cannot be going in a straight inclined angle in the market. So let's see, we have a few speakers at hand. I will hear them out if they have any questions or small comments to make. So Pradeep, we start with you, and I'm approving VK's request so we can set going. So Pradeep, you can unmute and maybe go ahead first. Okay, Pradeep is not coming. So VK, you can unmute and maybe ask your question or keep your limited points. Yeah, Hi Prince, how are you? all good, all good. How about you? Great, yaar. Enjoying this volatility. well, I've been pretty bullish on the markets, and what we are seeing right now, see small cap, mid caps. One needs to understand that we had a hell of a run in last 1 year. Stocks have gone up by nearly 300, 500 percentage.
So obviously, at some point of time, we would be seeing a good decent correction that we witnessed in the last 2 months. In fact, small cap indices index have given negative returns in the last 2 months, whereby they have started correcting, right? People need to understand everything doesn't go on forever. Things need to correct, consolidate, make a base, and then start a new rally. Uh, if you look at the indices of Nifty and Bank Nifty, nothing is telling me on a long time frame charts that the structure have gone bad and we are heading for some big kind of correction which would last a couple of months. ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे. Even today also, see, it was a very simple thing here. 20-day moving average on Nifty was around 22,220 और आज का लो भी देख लीजिए, वहीं पे उसने लो बनाया और जाके सीधा उसने ऑल टाइम हाई पे हिट बंद कर दिया. So people need to understand, instead of listening to all this fear noises and all, build up your own conviction कि भाई अगर टूटना है तो कुछ मूविंग एवरेजेस वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे टूटेगी, उसके नीचे वो जाना शुरू करेगा, देन अ सीरियस टाइप ऑफ करेक्शन विल स्टार्ट. बिफोर दैट व्हाई ब्लो योर ब्यूगल. ठीक है ना. मीट लार्ज कैप्स काफी टाइमों से दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग. नाउ द रैली वुड बी लेड बाय द लार्ज कैप्स एंड देन once the correction in the small and the mid caps get over, they would be joining this party. तो वो सब होने वाला है. द ओनली थिंग इज कि यू नीड, अभी अभी क्या होगा स्मॉल कैप्स में, अभी तक हमने देखा था एवरीथिंग वाज रनिंग. नाउ द मैन वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द वॉइस. यू नीड टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक. और जो स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया है, कि जिसका गाइडेंस अच्छा है, या यू आर पॉजिटिव अबाउट द कंपनी डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स इन द कमिंग क्वार्टर, तो वही स्टॉक्स पे आप फोकस कीजिए. सब नहीं चलने वाला. दैट पार्ट इज ओवर. जो एक साल में सब चल गया था, हाथी घोड़े, एनीथिंग वाज वर्किंग, वो नहीं चलेगा अभी. नाउ ओनली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज विल हैपन. सो नाउ वी हैव टू बी वेरी अजाइल, वेरी बोलते हैं ना कि फूक फूक के दूध पीना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट बैट योर मनी ऑन एनी स्टॉक और वो स्टॉक भागेगा ऊपर. So that is it. And markets are, I'm telling you, see, my theory is very simple here. Developed countries like US, Europe, Japan, all of them have declared they are into recession. और रिसेशन में वो लोग ने अभी लास्ट वीक सबने नए हाई बनाए हैं. किसी ने ऑल टाइम हाई बनाया, किसी ने 52 वीक हाई बनाया. If these countries and these indices are making highs, then we are much better than these countries. Our GDP is rocking, everything is good, so we should be very very overbought here. हम लोग क्यों सोचते हैं कि हम गिर जाएंगे? That is the first thing you have to settle your mindset on. कि we should stay overbought compared to this countries. That is the first thing you have to understand. वो कंट्री का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम दे. आज आज यूके का जीडीपी आया, देख लो आप कितना गंदा आया है. तो यार, एंड दोज कंट्रीज आर मेकिंग हाइज, तो हम तो वी आर वे अहेड, वे डूइंग बेटर देन देम. Tax collection is good, robust. GST collection is robust. Everything is good. The results have come fairly good. So focus on all that instead of just hearing a camp saying कि अच्छा fall आएगा, वो आएगा. In bull market, corrections are fast and furious. So always remember that. और टॉप्स कभी ऐसे नहीं बनता है. टॉप बनाने का, इफ यू जस्ट रिविजिट दोज टॉप्स मेड इन अर्लियर इयर्स, तो आप स्टडी कीजिए टॉप कैसे बना था. टॉप ऐसे नहीं बनता है. टॉप इफ्योरिया में बनता है, वेर ईच एंड एवरी गाय इज इन्वेस्टिंग. अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है. एक कुछ आरबीआई ने नोटिस भेज दिया और उसमें उसका पैनिक हो गया, वो करेक्शन आएगा. देयर इज नॉट द वे टॉप्स आर मेड हियर. So try to revisit those early years where tops were made, durable tops were made, और बाद में अच्छा सा फॉल आया. व्हाट वाज द रीजन? और चार्टिकली भी देख लीजिए, वीकली चार्ट्स में कैसे और डबल टॉप पैटर्न बनी थी और सब. लेट दो ऑल दोस थिंग्स हैपन ना. वो तो कुछ हो नहीं रहा है. सो well, I am bullish and my view is कि we are heading much higher. And Right. Bank Nifty would take the baton from here. I am pretty bullish on Bank Nifty. I see a very good momentum coming into Bank Nifty. So that's my views. Thanks, VK, and I can totally relate to that because there are certain good private banks which has been talk of the town, and I mean memes are or people are saying that things have changed and they haven't performed. So today I was seeing those names were strong in this market also. So probably the time to revisit that, which are the pockets, and especially
For the last 2 3 months, we have been seeing that people in the industry are saying that large caps have not participated well, and going forward, it could be a visible possibility that the large caps, which had not done very well in last 1 or 2 years, can drive the things, and especially the, as you rightly said, the bank Nifty thing, and even the Nifty 50 names, big names, can certainly do better from here. So obviously, when the markets are buoyant, so there are always advices coming from seasoned investors and minds that you have to be very specific on the incremental cash, because in times of narratives everything appears good, and whereas the factual position may not be the same. So, anyways, that is part and parcel of the market, and I must say these corrections are very good. Even we behaviorally can condition ourselves, because I mean, it's with everyone, right? Be it the groups on WhatsApp or other social media platforms, or maybe tweets. So you can fairly compare and sense that how behavior changes with the 2 or 3 days of some volatility in the market. So people who are very gung ho are, you'll find them going in a hibernation. So that kind of thing is very, very usual. So nothing unusual about that. So let's see, let's drive the discussion. So Ravi has also joined. So Ravi, what do you think could be a possible reason of today's volatility? हाँ प्रिंस भाई, आपका आपने हेडिंग दिया है मार्केट क्यों गिरी आज। बिकॉज मेरा मानना है कि उससे एक दिन पहले मार्केट ऊपर गई गई थी इसलिए गिरी। अब ये सब तो चलता ही रहता है प्रिंस साहब, आप तो जानते ही हैं कि ऊपर जाना नीचे आना, लाइक इट इज इनहेरेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वी कॉल द गेम एज मार्केट्स। So, I mean, I don't think that there is one specific reason why the market fell. It's just, a regular business. Right, fair point. So let's see. We have a few more speakers. If they have any question, we'll try to address. And I also see Jiten sir. Not sure he's in India or traveling. So, in case he would be free, would request him to join. Otherwise, we'll surely be moving to others. So Pradeep, again, a call for you. If you are there, you can unmute and ask. Otherwise, we'll go to Surendra ji. Yeah, Ravi. One thing which is very important regarding today's movement is that, like, जो आरबीआई को लोग स्केपगोट बना रहे हैं, लाइक जो भी उठापटक हुई है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वी थिंक वी आर ट्राइंग टू एक वो एनवेलप वे हुआ देखा। जबकि तीनों जो एक्शंस लिए हैं, तीन जो डिफरेंट कंपनीज पे आरबीआई ने, वो बिल्कुल तीन अलग अलग रीजंस के कारण लिए हैं। एंड स्पेशली जो ये आईपीओ फाइनेंसिंग को लेकर के जो एक डिसीजन लिया गया है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव। बिकॉज स्पेशली इन मार्केट्स जहां पे उतना विड्थ या डेप्थ नहीं है, आप समझ सकते हैं एसएमई एंड अदर काउंटर्स, जैसे जो हम लोग देखने को मिला है हमें कि लाइक कंपनी 60 करोड़ रुपए रेज करने आ रही है और बिडिंग करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए की हो रही है। तो इट्स अ वेरी वेलकम मूव एंड इट विल सर्व द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट इन द लॉन्गर रन, इन माय ओपिनियन। Fair point, and I totally agree. As far as this IPO funding is concerned, this has been discussed previously as well. And if government is thinking in those lines, so definitely it's good for the market. So Surendra ji, आप unmute करके you can ask your question or maybe keep your limited inputs. Over to you, sir. Mr. Surendra Dwivedi ji. I think उन्होंने वैसे भेज दिया. Anyways, so Amit, you have any questions or any input, small input to add? Definitely, Prince. See, first I want to start with this. When there is a greed, you should be selling. When there is a fear, you should be buying. First one is this fear. When the market opportunity to buy. If you look, what happened with BTC? It went high. Now, everybody will tell it will go up. Yes. But let's take the actual part. There's another big news, okay, I just wanted to cover.
Look at the whole financial market. It was a speculation, but now it is confirmed. The banks will be using I think you're breaking, Amit. You better drop once blockchain, and rejoin again so that we'll be able to hear properly. Right? and they are So, integrating so, with. Amit, you are breaking. So I would Okay, request you sorry. to drop once and rejoin again. Ah, So meanwhile, if our audience have any questions, so definitely would love to have their inputs also. Or if you have any questions, you can join us as a speaker, or maybe you can type in your questions in the comments, and definitely we can look to those things. Yeah, yeah, Ravi. Meanwhile, over to you. So Prince जी, like एक important aspect ये भी था देखने का कि despite such weak markets, we had some really good counters also which showed remarkable resilience or movement today. जैसे आप देखिए टाटा केमिकल्स एंड देन देर आर अदर कपल ऑफ नेम्स which showed very good movement, which again brings us to the original thesis that like बाइंग तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक होके करनी रहती है एंड वो समझ के करनी रहती है कि लाइक क्या ट्रिगर है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में. मार्केट को तो जो करना है वो अपनी जगह पे करता ही रहेगा. So, like, everything needs to be taken into perspective in order to come to the a larger picture. Yeah, that's what I wanted to add. 100% Ravi, I totally agree, and especially the names which do well in these turbulent times are surely the names should be a part of watch list, if not directly jumping onto them, so that you try to reason that what could be the potential reason, and if there is any development or anything interesting happening across those companies which can be utilized to our benefit. So definitely they demand our attention so that we can study those. So we got one more speaker. Let me see if so, guys. I fairly assume that there is no voice issue and we are simply going good to go. So Magic, you can unmute and ask your question, and then we go to Vipinji if he has any inputs or maybe answer his questions. Yeah. Magic, you can unmute and ask. Yeah, good evening, everybody. I had one question. I mean, the thing was that smart money was exiting today, and what levels do you think we should be careful before the real downfall starts, or the upward movement starts? What levels are we looking at? So, sir, what made you say that smart money was selling today? Like, how can you fairly assume that it was the smart money or not the weak hands? It was more. It was clearly smart money because it was clearly booking at higher levels and maybe margin calls too. I don't know because there was clear selling in the small and mid caps. The way the fall was, they were all going to 5% or most stocks. Right, sir. So, yeah, Ravi, you can surely answer. I think, sir, it's March and the valuation, and you rightly said people who are like sitting on good amount of multipliers in the names which they had invested at lower levels, so definitely there would be some profit booking on their part. Secondly, it's March, and as you rightly pointed out of on the margin thing, and even the advance tax angle is one thing which we can also ponder upon. So these are few and levels, sir. I do not check technical stat level. We'll see if Vipin sir has anything to add. Meanwhile, Ravi, you can contribute your part. So Prince भाई मैजिक सर जी ने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन का आंसर एक फेयर एक्सटेंट तक अपने क्वेश्चन में ही दे दिया है. See what is happening that like in recent corrections we have seen that the duration of the correction is shortening whereas the severity of the corrections is increasing. A key reason for that is this margins being triggered off, and we know that like obviously if for large cap stocks the getting margin is easy,
and that margin money is largely used to take make positions in small and mid cap. So, like, deriving from that, that smart money is going into large cap, and smart money is exiting small cap and mid caps. That would be a bit fast stretched. But then the thing is that whenever we will see market volatility, because a huge part of, like, participation in stock markets in India today is via leverage. So we will be always witnessing that, like, there will be a sharper and very quick cut in small and mid caps. But again, deriving anything more from this particular event would be thoda far fetched, in my opinion. And Ravi, like, correct me if I'm wrong. So tax harvesting, I mean, it pans out across March, or it's like near the end of the month, people prefer doing that. It spans throughout March, but yeah, I mean, the more closer you get to the month end, the severity increases basically. Right. So we can fairly assume, sir, like the indexes have obviously shown weakness, but they have taken support at the moving averages, so that needs to be look out 10 days to follow, especially till Friday. So we need to see how the weekly closing would be, and this is that we can, I mean, especially see, selling our existing positions won't be a wise decision until unless the trend changes in entirety, right? And on the top of that, putting your incremental money won't again be a wise decision until unless you are very sure about the business prospects, and the names which you are thinking of investing in are available at a very reasonable, or the margin of safety cushion is there in those investments. So Magic sir, you were saying something. Yeah, I wanted I mean, a confirmation of those levels. So beyond what level should I exit my positions, or continue my positions at for a higher level or a lower level, whichever the Sir, case may sir, be. a quick question. So had you invested for a, I mean, in a swing trade kind of thing, or your horizon of investment in any names which you are invested in is for 2 3 periods from here? No, no, I'm not in any swing trades. I'm invested to listening, but like I hear you all say that since this time is March and also these days it's all on leverage, the amount of fall is quite swift. And in these days, 20-30% are just by the end of the day. So you're unnecessarily losing such huge amounts. So that's what I wanted to know beyond, because a 5-10% fall on an index means it is a 30-40-50% fall on a small cap, mid cap, because generally other normal investors are all invested there. Sir, fair point. But again, I would say if we are like smart enough so as to time the market, then we will be venturing into these things. Otherwise, it would be okay. And when we invest in small and mid caps, and the horizon is say 2 3 plus years, so definitely on the back of our mind, we should be knowing that any correction can bring our the portfolio companies 20 30 or maybe 40% down. Plus, if I would say the selling decision should not be purely on the basis of 2 days of volatility. So there are few pointers as pointed out by various practitioners in the past, which you can. So if the names which you have in your portfolio and you have a significant gain in those names and valuation as per you are like stretched, so definitely you can bring some profit to your table. On the top of that, if your investment thesis has gone wrong, I mean, you had something in mind when you invested, but now the developments in the company, its business, or maybe there are headwinds in the sector in which the company falls. So definitely you'll be booking out, be it in profit or loss. So these are pieces of technicals. I'll see, sir, if we have anyone on board who can help you with the levels. So definitely, if someone joins, so we'll try to answer that. Yeah, Ravi.
एंड प्रिंस भाई, सर जी बेसिकली आपको लेवल से ज्यादा कैलेंडर की जरूरत है। आप लेवल मत देखिए, कैलेंडर देखिए। 5 अप्रैल को वापस से आप देख लीजिएगा डीमैट को, things will be much hunky dory. And secondly, like, as far as correction in small and mid cap goes, I don't think that for a fall of 5-10% in index, if you're holding the small cap which you are holding, if it hasn't gone random when it was going up, because 30, 40, or even 50% correction in small cap doesn't happen that easily and that fast also. If you know the reason why your stock went up in the first place properly, those reasons do not change overnight. The problem is you didn't know the reason why it is going up. It was purely speculation or expectation of something happening. And now when sentiments have gone a bit rabid, obviously you will be left wanting. So I mean, there is no point of worrying too much about all this right now. No, Definitely, Ravi, and I even agree with you on that point that other rationale of going up. No, the rationale of going up is in today's market, next 3 years earnings are totally discounted and the price is short of that. Now, when the fall comes, it has to come back to the year one earnings. So you are looking at that extent of fall. So that is where my concern is: should we hedge our portfolios for the long-term portfolios, the ones which we are looking at? Is the question there? That's a tricky one, and to be honest, it's more dependent on the expectations one which holds. I do not see, prices falling to the first year level, because you can never ever buy today's shares at yesterday's prices, because business moves on. And moreover, like sir, as you were also pointing out, so if the you were saying that three years forward earnings were there in the price, and if that has come back to 1 year or maybe at a valuation wherein you find comfort and your horizon is 3 years, so definitely you'll be investing more. On the top of that, I fairly assume that you would not be on leverage as far as your portfolio is concerned. Then again, there is nothing to be worried on that front. But again, if there are any weak names or something which is making you uneasy or sleepless, so definitely that has to be revisited. But again, timing the markets is I mean, at least we are not by far not anywhere near to that. But again, these are very individual things. And sir, on the hedging thing, I certainly do not have any answer to, because my limited style and limited experience is whatever I believe is good, and if that fits in my criteria, I invest, and let's see how things pan out going forward. Thank you. So, Vipinji, you have any inputs to make? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मनोज जी, बताएं। सर, जो अभी मार्केट में करेक्शन आया रिसेंटली, एक चीज तो क्लियर है सर, जैसे आरबीआई जो चीजें ले रहा है, जो भी स्टेप लिए हैं, तो अच्छा ही, मतलब अच्छा ही ले रहा है, जिससे कि फर्दरली आगे चल के कोई नया यस बैंक ना बने। और रेगुलेशन जितना स्ट्रिक्ट होगा उतना अच्छा है। लेकिन अभी एक चीज समझ में आ रहा है, जैसे अभी तक लास्ट 1 साल में जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप, सभी गधे घोड़े सभी चल रहे थे। अब आई थिंक वैसा नहीं होगा, जो कंपनी अर्निंग दिखाएगी वही सस्टेन कर पाएगी। राइट मनोज जी, बहुत सही कहा आपने। और डेफिनेटली देखो, मार्केट कैसे भी हो, ऑल्दो जब बहुत ज्यादा बाइंग मार्केट होती है तो सब कुछ चलता है, बट अगेन आपका इन्वेस्टमेंट को लेके अर्निंग्स पे ही ज्यादा फोकस रहना चाहिए, बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, और जहाँ उसे ग्रोथ और अर्निंग्स दिखाई दे रही है तो वहां पे ही डेफिनेटली पैसा बनता है। यस, तो जितिन एमपी या रवि भाई। मनोज जी, बस एक पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था। आपने बिल्कुल 100% सही बात बताई कि जहां अर्निंग रहेगी वहीं पे हमें मुनाफा दिखेगा आगे जाते हुए। बिकॉज
आगे का जो मार्केट है वो मतलब वो पिछले जो 1.5-2 साल हमने देखा है वैसा नहीं रहेगा। बट उससे भी एक महीन बात ये है कि सी देखिए सबको पता है अर्निंग जो कंपनी दिखाएगी वो अच्छा करेगी। बट देन मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। वो अर्निंग को पहले ही गेस करने की कोशिश क्या वो गेस कर ही लेता है। जैसे आज ही जैसे उदाहरण के लिए आज जो टाटा केमिकल्स में जो जंप आया है, आपको क्या लगता है टाटा केमिकल्स की अर्निंग आई है आज? तो हमें नहीं सर, वो बिजनेस को टाटा एक सन्स की जो एक लिस्टिंग होने वाला है उसकी वजह नहीं से। नहीं नहीं और भी दूसरे रीजंस हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि सी हमें ग्रैनुलर वे में जा करके चीजों को तोड़ कर देखना पड़ेगा। बिकॉज अर्निंग जब तक आती है ना सर, तब तक चीजें आगे बढ़ चुकी होती हैं। ये मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया बिकॉज क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आई हैव सीन दैट पीपल आर हार्पिंग अर्निंग अर्निंग अर्निंग। भाई ये तो टेक्स्ट बुक तक में लिखा हुआ है अर्निंग। आगे बताओ ना आगे क्या करें क्या देखें। तो आपको बिजनेस के जो डायनेमिक है ना वो देखने पड़ेंगे। वो सब जैसे आपने बहुत अच्छा ऐड किया कि एक उनका एक जो आईपीओ वगैरह का जो है उसके कारण एक स्पिल ओवर इफेक्ट इधर आ रहा है। और उसके अलावा भी दूसरे रीजंस हैं जैसे सोडा ऐश वगैरह की प्राइसेस बॉटम आउट वगैरह होना। तो ये सारी चीजों को एक जो एक अच्छा कद्दावर इन्वेस्टर है जो कि जानता है कि वो क्या खरीद रहा है, गधे घोड़ों में डील नहीं कर रहा है, उसके लिए तो मार्केट हमेशा रिवॉर्डिंग ही रहता है और आगे भी रहना चाहिए। ये मैं ऐड कर रहा था। जी जी हम्म। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। और आई थिंक अभी ना बहुत अच्छा समय है, अपने जो भी वीक स्टॉक्स हैं उनको जो आपकी वॉच लिस्ट थी जिन्हें आप अभी तक मतलब रिग्रेट कर रहे थे, सभी स्टॉक लगभग करेक्ट हुए हैं, तो उसमें शिफ्ट करने का आई थिंक। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉट ऑन सर, यही मैं भी एम्फेसाइज कर रहा था। जी सर। And time and again in our थैंक यू। sessions, we have been focusing that your, I mean, bandwidth is limited, right? So the number of companies or the number of stocks you should be tracking should fit in with that bandwidth, right? If you are something like full-time investor and has very good understanding of the markets, in that case, your horizon could be 50, 60 companies. If you are like working somewhere and doing investing parallelly, then obviously the horizon should decrease, or we can fairly assume that you are a very brilliant mind and able to do justice to the analysis or whatever you do with those companies. But again, for majority of the participants, it's always advisable to keep the horizon limited, and that too which you understand well. On the top of that, in an era of information overload, when everything has been being pumped or pushed onto social media, right? So that should be consumed with a fair assumption that most of it is of no use to you. And on the top of that, the people who are sharing that, again, we cannot count everyone in the same thing, but again, majority you can fairly assume that they might have some vested interest in that. So you have to own your decisions. Like if you are investing on tips or anybody's advice who is not registered, or maybe simply listening to any names in these conversation as happening today, then you yourself own the decisions. At some point in time, if you make money, you are lucky. If you lose money, then again the decision was yours. So we always emphasize that you should always be very particular in understanding the nuances. As Ravi Bhai was saying, that simply one point is not sufficient to invest in a company, but you have to connect the dots and find out like what all is happening, be it in the company or its peers or the sector. And what I mean, often the more ignored names provide you more margin of safety and cushion. But again, everybody's style is different, so we cannot generalize on that. But we should be fairly understanding. And definitely, so Ravi, I mean, if we get more question, we'll address that. Meanwhile, we can surely talk about two three top themes which has a long horizon, in the sense they can do well with a period with, I mean, with a view of 5 to 10 years from here. So definitely we can have some chat over that. So like yeah, Prince bhai, I mean thematically, obviously it's good that like they don't change overnight.
So, like, as we have said in the past also, I mean, themes like one very broad themes which comes to my mind is, aspirations. This encompasses a lot many different sectors, like right from real estate to, like, your I mean, to the likes of Sula and all, wine consumption. Then, like, even in FMCG, you can have this play like Nestle vis-a-vis HUL. So this, aspirational thing is a key aspect of what we envisage India to be into the future. And if that expectation turns out to be in the right direction, there is no doubt that why this thing shouldn't play out in different businesses at different segment. So that is one thing there. Then, like, as we you were discussing yesterday only with Aditya Shah yesterday about chemicals. So obviously we have seen that the entire sector has been stuck for around, like, 12 to 18 months period now. And lot many things, because we need to understand, stock prices get stuck, or, like, they fall down, go up, but businesses in real world, they continuously keep working onto something. Okay, they are continuously struggling, they are continuously addressing things which have been hampering their growth, profitability, etc. And that is where a real gap between, what it should be and what it is actually is created. And if we are able to identify that gap, and then definitely we are in for a good time, we are in for good money. So that's there. So the second one is chemicals, in my opinion, and in that bracket also, especially agrochemicals, because that segment has seen much harder times as compared to, the overall envelope. Then further, obviously, like, we are heading into the general elections, but again, with a pinch of salt, we can see that, like, irrespective of, like, whatever happens into the elections, the capex push by the government is something which cannot be undone overnight, because lot of work is going on, and there is lot of momentum, and there is lot of acceptability of those initiatives from both larger society as well as the business community, because majority of the initiatives are in the social sector, like Nal Se Jal and other things. And even for the one which are not directly related to, the social sector, they have a huge spillover effect for the entire economy. For example, logistics related drives and all. So there is a considerable amount of opportunity, in all these aspects. If we look at, I mean, if you look, one thing which comes to my mind, like, one is Nal Se Jal only. So one needs to break down that entire, scheme, and look into that which all players are, there, which can benefit from that particular scheme. Then, like, that national grid for supply of natural gas, which is being, laid down across India. So that is also an important initiative which can again throw us cues where we should look at. So yes, that's pretty much Prince. Why, like, this is how we need to brainstorm in order to, like, break down things for further, like, in technological changes also. Like, even though government as an agency is relatively stoic and skeptical with respect to technological changes, because they need to wait and watch, because they are not tech enthusiasts that they will keep running behind every technological change. But yes, they need to, keep a watch and everything, and whenever it stabilizes, they will start pushing into it. But then, that said, we know that the data consumption is going on. We know that big data, that is the key word. Like, Mukesh Ambani sir pointed out that data is the new oil. And for that, like, the associated themes are like data centers, then companies which can go for big data analytics, then companies which have, or which are trying to hone up their skills, stand up to the level of market in fields like machine learning, artificial intelligence. So these things, there are a lot many themes. The thing is that people get infatuated by the recent names which they listen, which they come across कि अरे ये ऊपर गया, वो चल गया, ये रॉकेट निकल गया, ये हो गया. Whereas, like, businesses which are thriving in the real world,
they are 24/7 on their track for doing what they want to do. So if like one is able to identify, real businesses which are making a mark in these particular fields, I think, I mean, there are a lot many different themes which one can play. Certainly, and one aspect, Ravi, I believe that how much of the story or the things are already in price should also be taken into consideration, because we have seen the concept of buy at any price, and how even the big money has performed in the past. So definitely that point should always be kept in mind. And you very well articulated about the aspiration thing. So the discretionary spend and consumption pattern is definitely something we surely be looking at. And as I'm a big fan of Atul Rawal sir, so he has a concept of called ancillary ka ancillary, right? So definitely, if you are studying some company, you should always have a look at their peers or any ancillaries to that. And even if there is further ancillaries to those pockets should also be studied. I'm not saying that all the time this works, but again, that gives you a perspective that what all one should look at. We should not be, and especially when we are like, there are times when we have money to invest and there are cooling periods when there is no money, so that time should be utilized in studying the names which we should be investing. Because most of the decision I've seen people take in as like, if I have money today and whatever I like today, so I end up investing. So those kind of things can do little well in the bull phases, but broadly that is not a good process to follow. So definitely you should be anticipating how much money would be coming to you, and when it comes, which are 2 3 companies and their levels where you can invest in them. So that should be pretty clear before making an investment, because when you limit your downside, so definitely you are protecting upside, right? So Manoj ji was asking about levels, so we got Vajpayee ji. तो वाजपेयी जी, क्विकली क्या आप इंडेक्सेस का, सभी इंडेक्सेस का एक लेवल्स का थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? हमारे एक ऑडियंस है जिन्होंने पहले पूछा था कि लेवल्स को देख के क्या लग रहा है टेक्निकल लेवल्स पे, अगर आप क्विकली व्यू देंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, तो थैंक यू प्रिंस जी। नमस्कार सभी लोगों को, जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। तो आपने टॉपिक जो रखा कि मार्केट क्यों गिरी आज, आगे क्या, तो यहीं से भी इसी में वो लेवल का भी बिंदु आ जाएगा। देखिए, मार्केट पिछले 4 महीने में, जब से हम लोगों ने अक्टूबर में एक साइजेबल करेक्शन देखा था, अक्टूबर में मतलब एक अच्छा खासा 1000 पॉइंट का जो गिरावट हुई 1 हफ्ते में, और हम लोगों ने एक मतलब पर्टिकुलर लेवल्स जो मजबूत थे वहां तक मार्केट को गिरते हुए देखा था। काफी स्टॉक्स में भी करेक्शन हुआ था, इंडेक्स में भी हुआ था। उसके बाद नवंबर का महीना जब स्टार्ट हुआ, वहां से हमने थोड़ा सा बेहतर देखा। तो जिस भी महीने में, हर महीने में कुछ ना कुछ एक हमको गिरावट देखने को मिलती है। तो प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि भाई थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट कम होना, हर वक्त हाई पे फियर का माहौल भी रहता है, तो एक वो भी कारण बनता है कि नया आदमी एंट्री नहीं कर पाता और पुराने लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब बात लेवल की अगर करेंगे, तो निफ्टी का लेवल जो 29 को क्लोज हुआ था, संयोग से उस दिन मैंने स्पेस भी किया था 29 को, और वहां पर जो क्लोजिंग थी वो लेवल हमारे हिसाब से बुलिश लेवल पे क्लोज थी। और मेरा ये मानना था कि मिनिमम टारगेट वहां से हमें ऊपर जाने के लिए लग रहा था 22,345। तो उसने 22,345 के लेवल को फर्स्ट को ही टच कर लिया। देन उसके बाद 3 दिन वहीं 22,345 के आसपास क्लोजिंग होना, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आना। आज उसने फिर मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। वीकली पीरियड का जो लेवल था 22,229, तो 22,229 पर वीकली पीरियड थी। परसों के स्पेस में मैंने बात डिस्कस की थी कि 22,229 हमारा एक सपोर्ट बनेगा, और उसके ऊपर एक सपोर्ट हम मान रहे थे 22,345 को, क्योंकि हम 400 के आसपास बनते। तो सेम थिंग हुई, 400 से हम गिरे, 22,345 पे हल्का फुल्का सपोर्ट मिला। देन कल थोड़ा कम गिरे थे, आज 22,229 के नीचे आकर के वहां से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट ले करके हम
जाके हाई के पास बंद हुए। तो 22,575 ये कल एक दिन बचा है मेरा इस वीक का। तो वीकली लेवल के बेसिस पे हम 22,575 का एक मिनिमम टारगेट मानते हैं कि वहां तक जाने की संभावना तो है। और अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीक में फॉलो अप अगर बनाना, फॉलो अप में हम मंथली का जो R2 है वो लगभग 22,700 के आसपास है, तो वहां तक भी जा सकते हैं। ये कंडीशन ये है कि हम 75 के ऊपर बंद हो, मतलब 22,575 के ऊपर क्लोज हो। फिलहाल जो मेरे सपोर्ट लेवल्स थे वहीं से सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलके जो रेजिस्टेंस था एक मंथली का वो कट गया, उसके ऊपर अच्छा खासा क्लोज हो गया। तो निफ्टी के मामले में तो कोई डाउट नहीं। सेम थिंग बैंक निफ्टी की बात है, तो बैंक निफ्टी आपकी वीकली रेजिस्टेंस 1 के ऊपर क्लोज है, तो वहां से हमें वीकली R2 तक इस हफ्ते में तो नहीं संभावना होगा, क्योंकि एक दिन बचा, तो एक दिन में तो इतना बड़ा नहीं तेज हो पाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मंथली R1 और वीकली R1 दोनों के ऊपर है तो फिलहाल उसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और वीकली R2 का लेवल चूंकि काफी ऊपर है तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो कई दिन में अचीव कर पाएगा। इन द मीन टाइम, अगर मैं बार बार कहता रहता हूँ अपने स्पेस में भी और आपके यहाँ भी मैंने कई बार इस बात को डिस्कस किया कि जब भी वीकली पिवट हमको अगर ट्रेडिंग करनी है, देखिए इंडेक्सेस का देखने का मतलब है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वीकली पिवट जो बनती है किसी भी वीक के एवरेज के बेसिस पे, तो उसके ऊपर रहने पर हम बुलिश व्यू रखते हैं, और जनरली जब मंडे और ट्यूसडे ऊपर रहता है तो वो ऊपर की तरफ ही रहता है। अच्छा, अब तीसरा इंडेक्स में निफ्टी आईटी की बात करूंगा। निफ्टी आईटी का इंडेक्स 2 दिन पहले, मतलब आज आपका वेडनेसडे, मंडे को ही वो मंथली पिवट से नीचे क्लोज हुआ था। तो मैंने परसों के अपने स्पेस में भी ये बात कही थी कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स हमको कमजोर लग रहा है, और यहाँ पर हमें लॉन्ग अवॉइड करना, अभी इस समय परचेजिंग अवॉइड करनी। तो परसों जो बात हुई थी कल वो गिरा, और आज भी वो गिरा, लेकिन आज उसने वीकली सेकंड सपोर्ट के पास से सपोर्ट लिया। तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक जो गिरे थे आईटी के, उन्होंने काफी रिकवरी की नीचे से। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल जो है वहां पर ले लिया होगा, तो हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है आईटी के स्टॉक्स में भी। आपका जो मिड कैप की बात है, निफ्टी मिड कैप आज चूंकि रेड में बंद हुआ, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का मैं लेवल शेयर करूंगा कि इसका जो मंथली पिवोट है दैट इज 48,353, और आज हमने इसको टेस्ट किया, मतलब इसके नीचे जाके फिर वो इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी। तो फिलहाल 48,353 के ऊपर जब तक है तब तक कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, और ऊपर की तरफ वही 49,763 यहाँ तक जाने की संभावना मिड कैप के इंडेक्स की रहेगी। लेकिन मिड कैप के इंडेक्स ने चूंकि पिछले 4 वीक में बहुत ही मतलब डोजी टाइप की कैंडल्स बनाई है, तो अभी उसमें बहुत स्ट्रेंथ सी नहीं दिख रही है। तो इसलिए मिड कैप में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हो रहे हैं अच्छे अच्छे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो उस पर जो है स्टॉक स्पेसिफिक अगर फोकस रखेंगे लोग तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा इन प्लेस ऑफ इंडाइसेस के। लेकिन ये जो मेजर इंडाइसेस, 3 इंडाइसेस तो मैंने ट्रैक किए थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी का। तो आईटी के इंडेक्स में मुझे परसों से ही वीकनेस लगी थी, और उसने कल भी दिखाया, आज भी दिखाया। बट आज का जो उसका कैंडल बना है वो रिवर्सल टाइप की कैंडल बनी है। तो ऐसा लगता है कि शायद वो फॉर द टाइम बिंग ये करेक्शन इसका पूरा हुआ हो। प्रिंस जी, और कोई डिटेल? सर स्मॉल कैप पे भी कुछ है? हाँ चलिए, स्मॉल कैप को भी एक मिनट बस देख के बताता हूँ। स्मॉल कैप पर मैंने ट्रैक नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। हाँ, तो स्मॉल सो कैप, मीनवाइल राम निवास जी आप जी 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 सर, प्रिंस जय जी, जय ऐसा ना बताएं बताएं। स्मॉल कैप थोड़ा वीकनेस पे है, क्योंकि वो भी मंथली पिवट से नीचे क्लोज है। तो 15,970 के नीचे जब तक रहेगा तो उसमें वीकनेस रह सकती है। अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है हमको स्मॉल कैप के इंडेक्स में। थैंक यू सर। सो या अमित, Since I want to be quick, I don't know, that's okay. Gold price has gone skyrocketed again, and silver price. Any inputs on that? 2019 160 and the silver price is going up.
Amit, your voice was very low. I missed that question. You were saying something about gold, right? Exactly. The gold price has gone up. It's about 2,160 and silver price is up. As you track gold index as well. I mean, can you see the chart and share any view, if any? I mean, I do not have any view over gold or, for that matter, silver or other commodities. तो गोल्ड पे देखिए मैं शार्ट में बता दूं मैं प्रिंस जी, 2112 का जो लेवल है उसके ऊपर जब तक बना रहेगा तो इसमें बुलिशनेस बनी रहेगी। आप 2112 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप कोई बाय करते हैं तो, और अगर सेल करना है तो 2112 ब्रेक होने पे ही थोड़ा सा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल ये स्ट्रीम मतलब बुलिशनेस की कंडीशन में खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री करना भी रिस्की काम है और यहाँ पर शार्ट करना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मंथली का जो रेजिस्टेंस 2 है उसके ऊपर क्लोज जब भी कोई चीज होती है तो वो एक नई टेरिटरी में चला जाता है। तो अभी फिलहाल तो 4 दिन से मंथली रेजिस्टेंस 2 के ऊपर है। 2112 का जो लेवल है ये मंथली का रेजिस्टेंस 2 है। अब इसके ऊपर और कितना जाएगा तो वो देखिए बहुत लंबा, वहां पर तो 2193 दिखता है, लेकिन 2193 का लेवल का मतलब शो ये कहना तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। ये मैं यही कहूंगा कि 2112 पर ध्यान रखें। अगर 2112 ब्रेक होगा तो फिर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी, अदरवाइज तो फिलहाल अभी स्ट्रांग है। Thank you, sir. So, one last call for our audience. If they have any questions, they can send in a speaker request or they can simply type in the comments. We will try to address them in our capacity. We are like more or less done for the day. And if there is any feedback or any suggestion, we are always open to that. So, surely you guys can get in touch with us. And definitely, as I always say, we had multiple speakers today as well, and the views shared are individual, so you can very well fairly assume that those are individual and biased views. So accordingly, we have to keep that thing in mind. So please do not act directly on anything being said in these spaces. These are educational. Always consider as a starting point, and advisable to have a conversation with your financial advisor before making any decisions rather than simply going on anybody else's advice who's not registered or sharing something on these forums. And certain audience and speakers were facing voice issues, though couldn't join today. So certainly we'll try to add them next time. Thank you so much. And if you are late to this conversation, you can listen this over my YouTube channel, Accidental Investor Prince. Yet to subscribe, please do that. We'll meet tomorrow. We'll be asking Arun Kumar, the 80/20 investor, to share his view on the small cap universe. So, as we had first spaces wherein we discussed 3-4 months ago about the small and the micro caps, so definitely we'll have a dedicated space on small cap universe tomorrow. So certainly you guys can join us tomorrow at 8 p.m. So with that note, I take everybody's leave. Thank you so much. Good evening and enjoy market. Volatilities are good. So stay invested, and if you're getting better opportunities, so definitely you can add if your horizons are long. You should not be making any decision in hast when the volatility is for 1 or 2 days, and especially as people, I mean, I was not there in the market that time, the 18-19 pain period in small caps. So even if that period comes, so that is again going to be full of learning for all the participants. So we should be utilizing all the phases of market, because it is always good to have a feel of all kind of cycles within the market to make ourselves better and informed investors. Because so far, like especially people like us, majority of us who have joined market after 2020, so we haven't seen all the facets of the market. So going for some
periods wherein you will experience prolonged volatility and corrections. And correction is rather not a appropriate word of these 2 days of volatility. So ideally, if index corrects more than 10%, then it should be termed as a correction. So prior to that, I do not think that should be counted as any correction. That is a mere volatility, and which is always good, so as to bring some sanity to the market whenever the valuations are believed to be very high. So before I close, Vajpayee ji, anything more on your part, or shall we close हाँ, for तो the बस day? प्रिंस जी देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, इसमें जितने भी लोग हैं इसमें से काफी लोग हमको फॉलो भी करते हैं, हमको भी फॉलो करते हैं, और जो लोग सीनियर लोग हैं उन लोगों को उनके बारे में तो वो तो बताते ही रहते हैं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट को थोड़ा सा लर्न करने का आप भी प्रयास करिए। थोड़ा अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी लर्निंग हो जाएगी, तो आपको फिर बिलीव करने में आसानी भी रहेगी। और इन जनरल कोई भी कुछ एकदम से कोई बात कहेगा तो उस पर आपको बिलीव करने के पहले आप सोचेंगे, एक बार थिंक करेंगे। तो अगर थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट रहेगा। मार्केट में देखिए ऐसा है कि ये एक हिस्टोरिकली जब भी इलेक्शन पीरियड होता है तो उस पीरियड में मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरती है। ये इसको यह समझिए कि गवर्नमेंट का कोई उस पर रोल रहता है। बट होता क्या है, इसके दो कारण जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही हो, बट जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में बहुत दिन तक रहा भी हूँ। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, देखिए निगेटिव पॉलिसी और पॉजिटिव पॉलिसी। अब आप कहेंगे साहब निगेटिव पॉलिसी तो गवर्नमेंट कभी निकालती नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी का जनहित में जारी करती है, कभी कभी वो पॉलिसी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अगेंस्ट भी हो सकती है। तो या फिर कोई बहुत अच्छी पॉलिसी जारी की जो किसी सेक्टर के लिए फायदेमंद भी हो गई। तो ये चीजें जो है ना, फॉर द टाइम बिंग 2-2.5 महीने तक नहीं रहेंगी। अभी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर डिसीजन नहीं होता है। तो अब क्या है, आपके सामने कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई निगेटिव चीज मिलने वाली होती नहीं है। तो ऐसे समय पे और गवर्नमेंट के प्रति होप, चूंकि देखिए अक्टूबर दिसंबर के रिजल्ट के बाद जो भी मार्केट के बड़े ट्रेडर्स होंगे या जो भी बड़े लोग हैं मार्केट में, उन लोगों का ये मानना हो गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब हमको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, पैसा बहुत नहीं निकालना मार्केट से। तो मार्केट ने इसीलिए राइज किया, जंप गैप अप हुआ, वो गैप अप सस्टेन हुआ, अक्टूबर भी चला, जनवरी भी दिसंबर भी चला, जनवरी भी चली। और मार्च का महीना ऐसा होता है कि मार्च के महीने के बारे में एक मिथ ये रहता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये बात बिल्कुल सही है, मिथ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, कुछ लॉस बुकिंग भी होती है, कुछ लॉस बुक करके लोग एडजस्टमेंट भी करते हैं। बट मैं पिछले 2 मार्च बताना चाहूंगा, आप लोग स्वयं चार्ट पे देख लीजिएगा। 2014 का मार्च 2014 एंड मार्च 2019। इसके पहले के मार्च की अगर हम बात करें 2009 की, तो चूंकि 2008 से मार्केट बहुत गिर गई थी, इसलिए 2009 में मार्केट सामान्य थी, मतलब ना गिरी थी ना कोई बढ़ी थी। और इलेक्शन के बाद उसमें बहुत मूवमेंट आया था, क्योंकि वहां पर 2008 का एक जो था ना, वो शैडो लगातार चलता रहा। और चूंकि उस साल का जिन लोग मार्केट में थे उनको पता है कि किस किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। और ऐसा नहीं मार्केट एक दिन में गिरी क्रम से उठी फिर गिरने शुरू हुई, तो नई नई घटनाएं आती रही। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है फाइनेंशियल टर्म पर। तो मार्च 14 और मार्च 19 के कैंडल आप लोग देखिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसी वैसी ही कैंडल बन जाएगी, बट अगर उतनी बड़ी ग्रीन नहीं बनती है तो बहुत बड़ी रेड भी बनने की संभावना नहीं रहती है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो जनवरी फरवरी की जो रेड कैंडल्स थी, उसके बाद में मार्च में हमने डोजी कैंडल ही फॉर्म होते हुए देखी थी। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट गिरेगी भी और बढ़ेगी भी, तो उससे बहुत डरने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ना तो आप टॉप पे बिल्कुल बहुत बड़ी पोजीशन बनाइए, और ना ही बॉटम या कहीं गिरता है तो वहां पर 60 पोजीशन तक बना दीजिए। थोड़ा सा अपना मतलब स्टडी बढ़ाइए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास करिए। तो मैं समझता हूँ अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, मिलती रहेंगी। और मैं जैसे हूँ या पेंशन, हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक काफी डिस्कस करता था, बट अब स्पेसेस में थोड़ा रोक दिया उसको करना। बट मैं अपनी टाइम लाइन पे जो स्टॉक मुझे बुलिश पैटर्न पे दिखता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, और उसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक भी मैंने कई बार बताया है। तो अगर उस लॉजिक, किसी भी लॉजिक को आप यूज कर लेंगे ना, तो आप
बेनिफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मार्केट भले ही टॉप पे है, लेकिन अभी भी बहुत से स्टॉक आपको रीजनेबल रेट पे मिल जाएंगे। तो बस मैं यही कहूंगा कि बहुत ना तो फुल होने की जरूरत है और ना ही बहुत निडर होने की जरूरत है। अपने ट्रेडिंग को या इन्वेस्टमेंट को अपने प्रॉपर तरीके से स्टडी करके करते रहेंगे तो आपको बढ़िया पैसा बनेगा मार्केट से। जी प्रिंस जी। Vajpayee ji. So Sheetal, are you able to speak? I mean, try unmuting and speaking. You were experiencing the issues previously. हाँ, अगर मैं ऑडिबल हूँ तो प्लीज लेट मी नो। Yes, yes, you are audible. तो क्या लग रहा है शीतल? What do you think could be possible reason of today's volatility? रीजन तो ऐसा मुझे मैंने कोई ऐसा जीरो डाउन नहीं कर पाया हूँ कि कोई खास रीजन से गिर रहा है। बहुत दिन से बढ़ रहा था और एक्सेसेस क्रिएट हुए हैं, तो वो मॉडरेशन जरूरी है। बीच बीच में ये करेक्शन कर लें, गिरावट कर लें, तो एकदम से एक लाइन से तो न बढ़ना अच्छा रहता है न गिरना अच्छा रहता है। तो अब ठीक है, मतलब आप ये मान लो कि 5 दिन 10 दिन से गिर रहा है, लेकिन गिरने की बात भी देखोगे तो हम कितने पीछे गए हैं? 1 महीना 2 महीना पीछे गए होंगे मैक्सिमम। 22,000 पे है निफ्टी। निफ्टी तो गिरा भी नहीं है। तो आज से 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं निफ्टी 22,000 जाएगी नहीं जाएगी। अब गिरने बढ़ने के बाद भी निफ्टी 22,000 पे ही है। स्मॉल कैप ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक करेक्ट हो गया, लेकिन बढ़ा भी तो उसी हिसाब से है। तो ये तो बिल्कुल, ये गिरना बढ़ना मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा और इसमें हमारा कोई जोर है नहीं, हमारी कोई इसमें से नहीं है। हमारा काम है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को पकड़ के बैठे रहना और अर्निंग्स पे और कंपनी के फाइलिंग्स पे, एक्सचेंज फाइलिंग्स पे और उनके ऊपर ध्यान देना, रेदर कि हम रोज के रोज ये शेयर प्राइस की मूवमेंट्स को देख के हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। राइट शीतल भाई, एक बहुत पर्टिनेंट चीज निकल के आती है जो हमारी आज तक की सभी कॉन्वर्सेशन रही हैं फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ या काफी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो काफी समय से इस मार्केट का हिस्सा हैं। तो बेसिकली आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको बहुत सारी बारीकियां को इकट्ठा करके या समझ के सीख के एक अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं बनेगा ना, कि आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है कि यार पैसा आ गया तो जो दिखा अच्छा लगा या जहाँ सोशल मीडिया पे सुना उसमें पैसा डाल दिया, तो वो आपको सस्टेनेबल लेवल पे पैसा बना के नहीं देगा। आप प्रोसेस बनाएं, आप चार्ट देखते हैं या फंडामेंटल्स के बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, जैसा भी आपका अप्रोच है। ऑल्दो एफएनओ डेरिवेटिव्स और इंट्राडे मैं अपने एंड से नहीं करता हूँ और ना किसी को बोलता हूँ, क्योंकि मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और जो चीज मैं नहीं करता वो किसी को मैं कैसे कह सकता हूँ। बट जिनको प्रॉपरली आता है उनके लिए ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट के लिए दैट इज मोर लेस मोर टुवर्ड्स रिस्की यू कैन कॉल। बाकी जो आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो यार म्यूचुअल फंड करो ना, कौन रोक रहा है? कोई शर्म नहीं आनी चाहिए म्यूचुअल फंड करने में। आप 2-3 साल का पीरियड देखिए, आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड पैरेलली कीजिए। अगर आप लगता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हो, तो ठीक है, फिर करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जो है वो आप उसमें म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स उनको भी नहीं बीट कर पा रहे, तो आपको वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में फोकस लगाने के बजाय जो आपका नेचर ऑफ वर्क है वहाँ अपनी स्किल्स बढ़ा के अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाना है, या आपका बिजनेस है बिजनेस ग्रो करना, वहां ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि उसको काफी मेंटल बैंडविड्थ आपकी और आपका टाइम चाहिए होता है, राइट? और उसके बावजूद भी अगर आप इंडेक्स को या फिर आप बोले म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को जो कैटेगरी एवरेज है उसको भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए। वो ठीक है, समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड में आपको वो थ्रिल नहीं आती है कि हाँ कि भाई आपका स्टॉक 1x से 2x या 3x हो गया या nx हो गया, उस टाइप की थ्रिल नहीं आती। बट अल्टीमेटली देखो यार, मार्केट में या फॉर दैट मैटर किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका
एक ऑब्जेक्टिव यही है कि पैसा बनाना है, राइट? अब वो आपका म्यूचुअल फंड से बने या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके बने या रियल एस्टेट में बने या इक्विटी में बने, जैसे भी बने, अल्टीमेटली आपको एथिकल वे में पैसा बनाना है। और पैसा वहीं बनेगा जहां आपकी समझ अच्छी होगी, साइकिल्स की समझ अच्छी होगी। क्योंकि मार्केट में इवन जो कोविड के जस्ट बाद भी आए होंगे, तो मोटा मोटी उनको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वन वे तो कुछ भी नहीं जाता है और सिक्लिकलिटी हर चीज में होती है। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए वी कैन डेवलप अ प्रोसेस। ठीक है, वो एकदम से नहीं बनता है, एक टाइम पे टाइम लगता है, बट एफर्ट्स लगाएंगे। और एक जो सबसे जरूरी चीज निकल के आती है वो ये है कि आप अपने बाय सेल डिसीजंस को लिखने लगे, या जो कुछ जर्नल ट्रेडिंग करते हैं तो जर्नल मेंटेन करें। तो इस टाइप की चीजें अगर आप करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसका हेल्प ये होता है कि देखो आज आपने क्या डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, हो सकता है इवनिंग तक या फॉर दैट मैटर कल तक आपको याद रहेगा। 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आपको वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो खुदा ना खास्ता मार्केट कंड्यूसिव नहीं है और अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो अगर आपने अपनी थ्योरी लिखी हुई है कि आपको लग रहा है कि यार मैंने ये टेक्निकल बेसिस पे लिया है या इस बेसिस पे लिया है, और वो थ्योरी वहां पे इनवैलिड हो जाती है, तो आपका डिसीजन पॉइंट थोड़ा इजी हो जाता है। और जैसा कि शीतल ने बोला, देखो अप डाउन तो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, ये तो चलता ही रहेगा। आपके डिसीजन इस हिसाब से होने चाहिए कि भाई उसके पीछे कुछ प्रोसेस या कुछ थ्योरी की बैकिंग हो। सिंपली ऐसे मतलब भाई वो बोला बाण, पार्थ बाण चला और आपने चला दिया, तो you may end up hitting once or twice, but most of the time it is going to miss the target. So I think this is very important. So let's see. We got one request. So let last one request, then we wrap up for today. Hi Naman, you can go ahead. सर ये मेरा शायद ये हेलो। Naman, you are a speaker. You can go हाँ, ahead. ये मेरा शायद रिफ्रेश नहीं हो रहा। आपने ये टॉपिक मार्केट क्यों गिरा आज लिखा है क्या? मार्केट तो आज ग्रीन में है। क्या बात है यार? हाँ, What a seriously. ये आपसे कोई गलती हुई है या यार बस निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा है यार। आपसे कोई गलती हुई है या ये मार्केट का ये मेरा ऐप गलत है? यार मेरे से गलती हुई, मैंने जो स्पेसेस शुरू की, और दूसरी गलती ये हुई कि मैंने रियलाइज नहीं किया मार्केट गिरी है कि नहीं गिरी है। ओह, माफी तो मिल जाएगी तो। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। So thanks everyone for joining प्रिंस in. आई जस्ट Hope जस्ट वांटेड टू से वन थिंग। हाँ हाँ भाई प्लीज। आप आपका ये स्पेसेज में मतलब काफी टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, नेवर गॉट अ सक्सेस टू ज्वाइन योर लाइव स्पेस। लेकिन जो आप यूट्यूब में डालते हो इसकी रिकॉर्डिंग, तो उसमें कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच आती नहीं। तो आई एम privileged to able to listen all your conversation in the YouTube। एंड मतलब कभी मौका नहीं मिला तो से थैंक्स। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो जस्ट वांटेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू यू। Thank you so much, Sheetal bhai. Really privileged to have this coming from you, and certainly in my limited capacity, I try to bring the best people or the best mind in the industry so that we all can learn. I also learn a lot. So thank you so much, and hopefully we'll continue to do that in future as well. So thanks for joining in today. Thank you everyone. Good night. Take care.